Hello everyone, welcome to my channel CMS Academy. Today we are going to study about accountancy. Now, why there is need for accountancy and accounting? Generally we heard three words, that is accountancy, accounting and accounts. What they are mean? Accountancy means it is a subject which tells about how to do the accounting. Accounting is a process of recording the business transactions, and there is a definition we will discuss in this video later. And accounts is the format in which we are recording the business transactions. Now, why there is need for accounting? As we know that human memory is too short. We are not able to remember what we have in our lunch or dinner yesterday. So, as we know that there are many business transactions that is not possible to remember by a businessman for 1 or 2 days or a longer period of time. So what the next step, what they did, they start writing the business transactions. In the earlier days, when the business transactions were recorded, they are recorded by a businessman only, and they give only a single effects on that. In the earlier time, the businessman record the transaction in the single entry system, but nowadays we are going to record these transactions on the double entry system. Double entry means the transactions are having the two aspects, that is a debit and the credit aspect. Today we are going to start with the first chapter of 11th accountancy, that is Introduction to Accounting. We are going to start with the definition of accounting. So, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. मैं अब आप लोगों को मैं इस डेफिनेशन के थ्रू अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज एन रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. एज वी नो दैट देयर आर मैनी बिजनेस ट्रांजेक्शन डन इन अ डे. एक दिन में बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस और द प्रोडक्ट्स और द गुड्स. ये सब जो आप लोगों को भी टर्म्स यूज करें ना, इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल डिस्कस दीज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो. पहले हम अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. नाउ रिकॉर्डिंग, हाउ दिस रिकॉर्डिंग इज डन. व्हेन यू आर गोइंग टू एनी शॉप, दे गिव यू अ बिल. दैट बिल बुक इज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. जैसे ही बिजनेसमैन और शॉपकीपर जो बिल में लिखता है, वो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, दैट इज रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. देन दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन वर क्लासिफाइड मीन्स आपको अभी मैं बार बार यही बोल रही हूँ, देयर आर मैनी बिजनेस ट्रांजेक्शन. बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज होता है, सेल्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, इनकम्स होता है. फिर वो क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट्स. जो जैसा सेल है तो सेल्स अकाउंट बनता है, उसके लिए परचेज है तो परचेज अकाउंट. ऐसे उनको हम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स हम डिवाइड करते हैं. तो वो हमारे को कहलाता है क्लासीफाइंग. देन समराइजिंग मीन्स जब हमने रिकॉर्डिंग के बाद पर्टिकुलर इवेंट्स और हमारे बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन थे उनको हमने क्लासीफाई किया, अलग अलग अकाउंट्स में प्लेस कर दिया. उसके बाद उनको हम लोग टोटल कलेक्ट करते हैं, उनका बैलेंस निकालते हैं. दैट इज नोन एज समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज transaction and events which are in part at least of a financial character. What do you mean by this? As we know, जैसा कि हम लोग we are not going to record the honesty of the worker or the hard work of the worker, so that will be converted into money transaction. As similar, we are going to take an example of goods purchase of oil, 1 kg of rice, that is not recorded because there is another oil is measured in liters. So that all are related with a money transaction, means rupees. We are going to add the per liter charges. Rice, 1 kg of rice, rate at the rate of 100 rupees. So 1 into 100, that becomes 100 rupees. So that transaction will be recorded in the accounts. Next, we are going to take an example of oil. I am going to take another example of oil. 2 liters of oil at the rate of 150 per liter. So the amount which is recorded, that is 2 into 150, that becomes rupees 300. So we have to convert all the transactions in money. After that, the last point is interpreting the results thereof.
Interpreting the results thereof means we are going to compare the results. Results are in the form of P&L account and balance sheet. So from P&L account we know the profit of the business, and from the balance sheet we know the financial positions of assets and liabilities, and that I will discuss in the next later chapters. So interpreting the results, it means we are going to interpret the results of a business with the other years of the business. What are the profit, क्या profit हमारा पिछले साल था और इस साल बढ़ा है या कम हुआ है, और लॉसेस हुए हैं या हमारे एक्सपेंसेस में कहाँ पे ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं. दैट मीन्स इंटरप्रेटिंग मीन्स द कंपेरिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. उसके बाद हमारा आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ मीन्स है, उससे हम अभी मैंने आपको बताया कि एक ही बिजनेस का हम डिफरेंट ईयर से करें. सेकेंडली वी कैन कंपेयर और इंटरप्रेट द रिजल्ट्स with the same nature of business of two companies. So that is known as the interpreting. Interpreting किस लिए ज़रूरी होती है? Interpreting इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या हमारे कहीं एक्सपेंसेस कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, और इन चीज़ों को हम फिर कंट्रोल करते हैं. So this is the explanation of the definition of accounting. Now I want to tell you the characteristics of accounting. The next topic is the characteristics of accounting. These characteristics of accounting we can find from the definition itself. जो मैंने अभी आपको इतना clearly बताया कि recording, classifying, summarizing in a significant manner, these all are the characteristics. The first characteristic of accounting is identifying the business transaction. It means that the business transaction, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि they are in money terms. मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर दैट देयर विल बी एन एविडेंस ऑल्सो, कुछ उसका एविडेंस भी होना चाहिए, यानी कि प्रूफ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लाइक दैट. तो इनके एविडेंस हमारे पास होते हैं रिसिप्ट्स एंड बिल बुक्स. Second character is measuring the business transaction. Measuring means we are going to measure these business transactions in the terms of money or the currency of the country. So that is financial transaction and events are recorded in money terms. So in case of our country, India, that is measured in rupees. Next characteristic is recording the business transaction. Recording the business transaction, it means that the business transactions are recorded in the books of accounts. So हमारे सबसे पहले जो books of account होते हैं, that is the primary recording is done in journal, and that journal is made with the help of bill books. Now the books are subdivided in cash books and subsidiaries books. Cash books records all the cash transactions of the business, and as we know that business are having cash as well as the credit transactions. So the credit transactions of the business are recorded in the different subsidiaries books. They are purchase books, sales books, purchase return books, sales return books, bills payable, bills receivable books, and journal proper. The transactions which are not recorded in cash book and other subsidiary books, they are recorded in the journal proper. The next characteristic is classifying. Classifying means the recorded transactions are classified in different accounts. जो कि हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए थे, वो हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर नेचर क्लासीफाई करेंगे और डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल दैट हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे होता है दैट द बिजनेस इज स्टार्टेड. सो बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश. सो देयर आर टू अकाउंट्स, कैश एंड द कैपिटल अकाउंट. सो दीज टू अकाउंट्स आर डिफरेंटली प्रिपेयर्ड. अकाउंट्स मतलब हमने जनरल में तो कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट लिखा था, लेकिन उसको जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो कैश के ट्रांजेक्शन हमारे सारे कैश बुक में जाएंगे, और जो अदर ट्रांजेक्शन्स और एक्सपेंसेस और जितने भी हमारे इनकम्स हैं वो अदर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे. फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट हम बनाएंगे, उसके लिए कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देयर आर मैनी अकाउंट्स वी विल डिस्कस आफ्टर इन द अदर कमिंग चैप्टर्स. The other characteristics of accounting is summarizing. Means जब हमने इनको अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया तो हम इनको समराइज करते हैं. समराइज मीन्स वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दीज इंफॉर्मेशंस in that form that they are useful for the internal and the external users. So we are going to prepare for that trial balance, trading and P&L account, and the balance sheet. Trading and P&L account and balance sheet is known as final accounts or financial statements of company or the business. The next characteristic is analyzing and interpreting. Analyzing means
अब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गए, दैट इज ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, इनसे हम लोग एनालाइज करते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट द फर्म इज अर्निंग, हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस इज अर्निंग एंड व्हाट आर द लॉसेस और द एक्सपेंसेस डन, क्या हमारी पोजीशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की, इसको हम एनालाइज बोलते हैं। इंटरप्रेटिंग मीन्स द कंपैरिजन, तो हम बिजनेसमैन कंपेयर करता है अपने बिजनेस का डिफरेंट ईयर्स में, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में उसको प्रॉफिट हुआ है, इस ईयर में क्या है, या लास्ट 2 ईयर्स में उसका प्रॉफिट लॉस कैसे वैरी कर रहा है, तो उसको हम इंटरप्रेटिंग करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। और एक बिजनेसमैन सेम नेचर के बिजनेस से भी अपने फर्म और बिजनेस और कंपनी को कंपेयर कर सकता है, उसके रिजल्ट्स को, कि वो उनका कितना एक्सपेंसेस लग रहे थे, हमारी कंपनी के कितने कॉस्ट आ रही है, इस तरह से दिस इज नोन एज द इंटरप्रेटिंग। सो इंटरप्रेटिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि जियो एंड एयरटेल दोनों हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, तो वो दोनों कोई भी एक, जैसे कि हम लेते हैं एयरटेल, कंपेयर कर सकता है अपने बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट आर द एक्सपेंसेस दे आर डूइंग, और हमारे जियो से कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उससे दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं बिजनेस के? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड, वो ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमने जो फ्रॉम द 5 ईयर्स और वी कैन कंपेयर द करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर से हमारे एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेस क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, ये सब चीज़ें, तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं लाइक द कंज्यूमर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंकर्स एंड ये हम लोगों को जब बिजनेस को ये लोन्स वगैरह देते हैं तो दे आर इंटरेस्टेड कि बिजनेस इस पोजीशन में है कि दैट विल रिटर्न देयर मनी बैक। एंड क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारे लिए इसलिए होती है कि दैट गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड रहती है दैट द बिजनेस मैन रनिंग द बिजनेस और फॉलो द ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट और he is in a position to pay the taxes. The next topic is accounting is a science or an art. As we learned earlier, accounting is an art of recording, classifying, and accounting is related to achieve or desired activities. So it is treated as an art. And as science, as we know that sciences depend on some principles, and accounting is also having some principles. We do the accounting process following the principles of accounting. We can say that accounting is an art and a science also. The next topic is accounting process. What do you mean by accounting process? The process by which we are doing the accounting. तो accounting हम कैसे करते हैं? That is clearly explained in the definition. First is identifying the financial characters कि कौन से business transaction जो they are in terms of money that are recorded. Recording means they are recorded in the form of journal, cash book, purchase book and other books. Then classifying means they recorded transaction. Classified means divided and posted in the ledger in the different accounts. Summarizing का मतलब हम जो लेजर्स हैं उनसे फिर हम उनके अदर स्टेटमेंट्स में अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Then after that interpreting and communicating the results thereof. This is the process of accounting. Now we are going to discuss about the branches of accounting. There are mainly 3 branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. Financial accounting deals with the financial transactions of the business, recording, classifying, summarizing. These work is done under the financial accounting system. Then cost accounting means to ascertain the cost of the product, means what is the cost of producing a particular product is to be determined under this head. Then management accounting. Management accounting is recently developed accounting. In that, what is the function of that accounting is to ascertain the funds, maintaining the cost and providing funds to the finance and other business departments. Now we are going to discuss the objective of accounting. The first objective of accounting is recording the transaction. Means why we are doing the accounting? First we record the transaction of the accounting. As we earlier discussed, that is objectives are also derived from the
accounting definition. First, recording all the business transactions. Second, determination of profit and loss means for that when the business transaction recorded and to know the profit and loss account, we are going to prepare the income statement that contains trading account and P&L account. By that we are going to know प्रॉफिट्स कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एसेट्स और लायबिलिटी की क्या वैल्यू है उसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मीन्स our business transaction, all the recording of business transactions and the income statement and the financial positions help the management to make their policies and plans. How they are going to, for which the department needs the funds or from how we ascertain our costs. This is also determined by the management with the help of these statements, that is income statement and positional statement. Profit and loss account और बैलेंस शीट की हेल्प से मैनेजमेंट अपने फ्यूचर प्लान्स बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। Now, first we are going to know about who are the users. Users are of two types, that is internal users, management of the business, and external users, the outsider from the business, that is bankers, creditors, and other. So the accountant provide the information both to internal and the external users. Protecting business assets. Accounting is also helpful in protecting the business assets. अकाउंटिंग के द्वारा हमें पता रहता है कि हमारे पास कितने असेट्स हैं तो हम उनको मेंटेन और प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज to maintain or record the business transactions systematically. Systematically means to follow all the rules and the principles of the accounting. Second point is preparation of financial statement. Financial statement means we are going to prepare the income statement and the position statement. बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद इनकम स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो होता है इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाने, यानी कि P&L अकाउंट to know the profit and balance sheet to know the value of assets and liabilities. They are prepared for an accounting year and these statements are very useful for the users of business. Meeting legal requirement. नेक्स्ट पॉइंट मतलब यदि आपने अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, अकाउंटिंग की हुई है, तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो होता है लीगल रिक्वायरमेंट। द थर्ड पॉइंट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। इफ द बिजनेस इज मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस and principles, concepts of the accounting, they will be treated as an evidence by the court of law. The next function is communicating the information to the users. As I told you earlier, after making the accounts, these informations are present in front of the external and the internal users. And the fifth point is assistant to management. These financial statement helpful to the management in making the policies and plans for the future of the business, and they are helpful in ascertaining the cost or reducing the cost. Now we are going to discuss about the advantages of accounting. So the first is that it gives us the information relating to the business is earning profit or suffering from losses, the positions of assets and liability at the end of the accounting year. Next, facilitating management. It is helpful in making the plans and policies, or it facilitates the management. Then the third one is, next point is, we're not going to remember all the business transactions as they are already recorded in the books of accounts. हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि सारे हमारे अकाउंटिंग के द्वारा बिजनेस अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्डेड होते हैं। नाउ इट इज़ हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज। A systematic accounting records helpful in settlement of income tax and goods and services tax liabilities. Facilitates loans. As we know that banks provides the loans. बैंक हमें जब लोन देता है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि उनके थ्रू
banks know that their business is in a position to pay off the loans or not. Evidence in court. Our systematic accounting records are used by the court as an evidence when there is lawsuit against the business. Facilitate sale of business. If a businessman maintains all the accounting records systematically, तो वो बिजनेस यदि सेल करना चाहता है उस समय भी उसको फैसिलिटेट करता है टू इंक्रीज द परचेज प्राइसेस. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. If a businessman is recording all the business transactions systematically or doing the accounting systematically, that is helpful at the time of sale of business. यदि बिजनेसमैन अपना बिजनेस बेचना चाहता है तो जो उसका परचेसर है वो अकाउंटिंग देखकर, बिजनेस की अकाउंटिंग देखकर, तो जो परचेसर होता है उसके लिए इजी हो जाता है परचेज प्राइस सेट करना. असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. Assistant in the events of insolvency. As we know that insolvency means a person is not in a position to pay back the debts. So ये जो हमारे accounting records होते हैं, यदि बिजनेसमैन ने सिस्टमेटिकली प्रिपेयर किए हैं तो वो हेल्पफुल रहते हैं एट द टाइम ऑफ मेंटेनिंग द डील्स. हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट. इफ द बिजनेसमैन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस systematically, it helpful at the time of admission, retirement, debt dissolution and amalgamation of partnership firms. Accounting is helpful in decision making, as we know that all the decisions are taken basing on the accounting made by the businessman, and that is also helpful in setting up the cost of the goods. The goods are sold at which price. Role of accounting in business. As we already discussed about that role, what is the role of accounting in business is recording the business transactions properly or systematically. Assistant to the management means it helps the management for making the business plans and policies to ascertain the cost and providing the funds. Facilitates the comparative study. तो ये जो हमारे रोल अकाउंटिंग का क्या रोल होता है कि वो कंपैरिजन में भी इजीली हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या कॉस्ट क्या रही है, तो इस साल से उसको कंपेयर कर सकते हैं या सेम नेचर के बिजनेस से, या फिर दो बिजनेस जो सेम नेचर के उनके कंपैरिजन कॉस्ट वगैरह का कर सकते हैं. दीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एन एविडेंस.